Hello guys, welcome to Girls Republic on ARY Musik. This is Becks. I hope you guys are doing well. Today we've got another brand new topic for you guys that we're going to be talking about on the show. And you can leave your feedback on my Facebook page, which is BecksCon. And you must have noticed that, खैर वो बात छोड़ें, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. मैं तो अपनी बातें लेकर बैठ जाती हूँ. So today we're going to be talking about what you can do in your spare time. तो मैं अपनी यहाँ से अपनी थोड़ी बहुत खुद भी नॉलेज वाली थोड़ी सी टिप्स दे दूँगी जो आप भी उस पर you can just work on it, and where you think that you don't have anything to do, so you can basically do something productive in your free time. जिस तरह के weekend आता है तो weekend पर हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें. तो I'm just here to give you guys a little bit of tips where you can just make your time more, you can make it more quality time and not like a time that you actually wasted. So you don't want that, because every minute of our day, every second is precious, because we don't even sometimes realize that what we have is time all to ourselves, because time is something that you can just you shouldn't be wasting it. जिस तरह कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं हम फिर बाद में बोलते हैं क्या टाइम वेस्ट करने वाला काम था ये. So you don't want to do that basically. तो आज हम आपको tips भी देंगे throughout the show, and also you can leave your feedback on my Facebook page, which is BecksCon, and also on Instagram, which I've been getting a lot of messages जो कि मैंने कल भी एक पढ़ा था कि शो के रिलेटेड भी हमें जो इतनी फीडबैक आ रही होती है कि हमें इस शो पे गेस्ट लेकर आना चाहिए. So I'll actually taking under consideration, so we are going to work on it as well. So I'm going to give out one tip जो कि बहुत सारे I think ये उनके लिए होगी जो students होते हैं, where they just think कि weekend start हो रहा होता है, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि homework जो teachers दे रही होती हैं उस पे focus करते हैं इतना है कि that they just feel like strangling themselves, not the teacher but your own self, and where you just think कि हमने तो अपना सारा time waste कर दिया, we didn't have anything to do, because that's how we girls mostly are like, and we just thinking जिस तरह कि हमारे sleepovers भी होते हैं. तो sleepovers में what we do is, अभी it's been a while since I've had one sleepover. तो ये sleepovers में what you do is just dress up and just put your makeup on and just trying on new clothes, because you don't want your sleepover to be all dull, because if it's going to be dull, right, you're not going to be having fun, and you don't want to waste it by staying on your phone, because that's what people do. कोई भी hangout का time होता है, कहीं पे भी बाहर जा रहे होते हैं, they just stay on their phones. If you don't know about this celebrity from Hollywood, Kylie Jenner, what she does is, right, whenever she goes out with her friends or family, because family is, they're precious, and you would never want to, like, obviously if you are spending time with your family you would want to be there physically. Obviously you are there physically just like I am right now, but you're not there mentally, right? Physically or mentally जो बहुत ही different होता है उसके, अगर आप if you just Google it, right, तो बहुत ही proper psychology subject आ जाता है. But what I think is, if you are having a free time, if you have free time on yourself, जो कि working girls होती हैं या फिर कोई students होते हैं उनको time नहीं मिलता exercise करने का, वो I would suggest is कि free time में अगर रात हो दिन हो दोपहर, दिन तो दोपहर एक ही होता है, सुबह दोपहर रात को, you can actually work out, give 10 or max 15 minutes to yourself. कि ये नहीं कि आप बोले नहीं I'm too lazy. I mean, you need to look after yourself first, because you should be putting yourself first. I know that's a bit selfish, but then again, it's your life at the end of the day. Anyways, we have a call. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहा है? मैं अलीना बात कर रही हूँ. आप कैसी हैं? अलीना, मैं ठीक हूँ. तुम बताओ कैसी हो? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक. आप बताएं? मैं भी ठीक हूँ. अलीना, ये बताओ कैसे दिन गुजर रहा है? अभी तो अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा रिलैक्सिंग डेज गुजर रहे हैं, थोड़ा हम रिलैक्स कर रहे हैं, थकान उतार रहे हैं अपनी. अच्छा, वो कैसे? बताइए कि आप काम कर लिया, सीजन चला गया, आप थोड़ा आराम के दिन अब आराम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे. हाँ अच्छा, घूमेंगे फिरेंगे, वो आगे से मुझे सॉन्ग माइंड में अलीना याद आ गया. अच्छा, मुझे अलीना ये बताओ कि अभी तो जिस तरह तुमने कहा कि फ्री टाइम चल रहा है, तो इस फ्री टाइम को प्रोडक्टिव करने में क्या करती है? ऐसे या तो टाइम पूरा एक जिस तरह से संडे का दिन होता है, हर किसी का संडे के दिन कोई काम मोस्टली नहीं होता, तो संडे का पूरा दिन जब गुजर जाता है, रात को हम जो लड़कियां बोलती हैं यार मैं तो दिन ही वेस्ट कर दिया, कुछ किया ही नहीं, कोई स्पेशल कुछ करना चाहिए था, कुछ काम कर लेते या कुछ कर लेते, लेकिन पूरा दिन वेस्ट कर दिया क्योंकि थिंकिंग लाइक कि हम प्लान्स कर रहे होते हैं. तो आप किस तरह अपना पूरा, अगर कोई फ्री डे होता है, किस तरह स्पेंड करती हो, क्या करती हो? मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा सा फैमिली के लिए कुक कर लूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत कम टाइम मिलता है कि अपने हाथों के बना के खाने खिलाऊँ लोगों ज़रा. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुक कर लूँ अच्छा सा, अपनी पापा की फेवरेट डिश हो जाए, उन लोग की ज़रा अच्छी सी खातिरदारी कर लूँ. बाकी ये कि अम्मी से ढेर सारी बातें करती हूँ, बहुत सारी. हाँ हाँ
और जब बाबा आते हैं तो थोड़ा सा उनका भी दिमाग खा लेती हूँ. पापा कहते हैं तुम मेरे पास बैठा ही नहीं करो. बहुत बोलती हूँ. अच्छा, तो आपको तो वीजे होना चाहिए, बहुत बोलती हो ना. हाँ, आज रह चुकी हूँ मैं, बहुत बोलती हूँ, सबको पता है. अच्छा, तो क्या कहाँ से बातें लेकर आती हो आप? पेरेंट्स आपके बोलते होंगे यार क्या शी टॉक्स अ लॉट. वाकई में बातों से बातें बहुत, मतलब मैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक हूँ. लाइक सारी बचपन की बातें आ जाएंगी, फिर फ्यूचर प्लानिंग्स आ जाएंगी, प्रेजेंटली क्या हो रहा है, मैंने क्या सोचा, बस सारी बातें शुरू हो जाती है. हाँ, तो ये फैमिली के टाइम को, अगर जब फैमिली टाइम हो जाता है फिर क्या करती हो? अगर जिस तरह के एक्सरसाइज हो गए या फिर बुक पढ़ ली या कोई प्रोडक्टिव काम करी, ये नहीं कि वेस्ट कर दिया. उसके बाद मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो कि मैंने अपना वर्क है उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी. लाइक मेकअप टूल्स वगैरह देख लिए मैंने, वीडियोस वगैरह देख ली, हेयर स्टाइलिंग देख ली, उसकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, डमीज वगैरह. तो आप मेकअप टिप्स देती हो लीना अपनी, जिस तरह फ्रेंड्स होती हैं, फ्रेंड्स को जो है ना इस तरह की चीजें लड़कियां बताती नहीं है कि हम मेकअप में ये करते हैं वो करते हैं, तो आप कैसी फ्रेंड हो के आप बता देती हो टिप्स या नहीं बताती? एज अ प्रोफेशनलिस्ट मैं उनको अपने सीक्रेट्स नहीं शेयर करती, लेकिन एज अ फ्रेंड वो टिप्स दे देती है, तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तुम बीबी क्रीम से काम चला लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो. तो दे देती हूँ टिप्स वगैरह, मैं दे देती हूँ. अच्छा, दे देती हो. समटाइम्स ये हुआ कि कोई मीन जो आपकी ग्रुप में या कोई लड़की ऐसी हो जो बहुत रूड हो एटीट्यूड, तो उसको नहीं देती होगी, उसको बहुत बुरी टिप्स देती होगी कि असल में सीन ये कि ग्रुप में तो हमारे पास सिर्फ 3-4 ही लड़के नहीं, और सब अलग अलग फील्डों की हैं, तो सबको मुझसे ही पूछना पड़ता है. अबाउट मेकअप हो गया या अबाउट ड्रेसिंग, लाइक फैशन के हवाले से जो भी डिस्कशन होती है वो मुझसे ही करते हैं. यार रीना हम क्या करें, बिजी होती है ना, बोल देते हैं यार लिटरली आई एम बिजी राइट नाउ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ. चलो ठीक है, हम रात में कॉल कर लेंगे. तो इजीली सजेशंस दे रही होती हूँ. All right, okay. Thank you for calling, Alina. It was nice talking to you. Bye-bye. Okay, guys, today we are talking about what you can do in your spare time if you have free time on your hands, right? What you can actually do, something productive about it. So that's what I'm going to be giving you tips about. For now, I'm going to be going for a break. I'm going to be back here watching Girls Public. And we're back from the break, guys. You are watching Girls Republic. Today I'm giving out tips where you can do what you can do in your spare time. So that's what we're talking about today. And as Alina said, that she spends her time with her family, because whenever she's got free time on her hands, right, that's what she does. She spends it with her parents, and where she talks a lot, right? I know how that's like, because if you get along really well with your parents, right, because mostly some people, some kids, they don't get along really well with the parents, and most of all I've seen is in few families, right, what they do is parents, right, they're just hanging out and just going out for parties and dinners and stuff like that, and they're not giving that proper attention to their kids. And that's the main problem, where kids actually get spoiled and they just they don't care about anything. They just forget about the morals and values, and they don't give respect, because if they are not getting that proper you know, if their parents are not teaching them proper manners and stuff like that, because they're too busy partying and stuff like that. I know you guys must be thinking कि इस तरह भी लोग होते हैं, इस तरह होता है कि her sides जो हैं, there's no like good and good everywhere. You can't really see good in everyone, but you have to, because this is what life is all about. But anyways, at the end of the day, आपको देखना पड़ता है कि इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा या कोई अच्छी क्वालिटी निकली आती है, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि नेगेटिव हर चीज़ में ढूंढते हैं कि अगर एक इंसान है, you know, they just like अच्छा इसमें तो ये बुराई है वो बुराई है, तो इस तरह करते करते you're just changing your own thinking. It's going to be bad for your own self, because then you're not going to be meeting up with people, which you should be. Just like your spare time, you should just fix a time, like evening time for tea, and you can just go out with your let's just say आपके कहीं school में कोई new student आए, if you are a student. Why am I giving out examples for students? Because obviously we have callers who call in, and they are students, most of them they are. But anyways, what I think is कि अगर इस तरह हम करने लग जाएं कि spare time में अभी किसी new student के बाहर कोई tea time रख लें, and just get to know them, because what I've seen is let's just say, right, there's a new girl coming to she's coming into your school, right, and where you're just thinking, oh, she's new, we should just bully her. I mean, that's not right. You can't really judge that person, because you don't even know them. You just know them by the name, and you cannot really judge a book by its cover. That's what the quote is. लेकिन यही होता है कि आप अगर स्पेयर टाइम में कोई अच्छा जिस तरह के
what I think is spending time with your parents, most of all, it's really that time is going to be more precious, because as compared to if you're just hanging out with your friends, that's going to be all right because you are going to be spending time with them all your lives. But then again, जिस तरह के हो गया कि मुझे जो लगता है कि आपको spare time में क्या करना चाहिए is work out, because that's one that should be on the top. Well, on the second top, I think. क्योंकि first आपके होगी parents को time spend कर लिया, और second होगा कि you can just work out. And nowadays I'm actually thinking, because I haven't been working out quite some time, because obviously Ramadan खत्म हुआ है और फिर ईद थी, और ईद जो है is just ended now, because obviously और इसमें जो है बहुत लड़कियों को हो रहा होता है, conscious हो रही थी, oh my god we need to lose weight. If you have spare time on your hands, right, you can just go to any gym that's आपके घर के अगर करीब हो तो आप वहाँ जा सकते हैं. अगर आप जिम if you don't have that facility, right, you can even work out at home. And if you're just feeling a little lazy, so you can also stay at home and just Google कर सकते हैं. आजकल तो सब कुछ Google पे है, where you can just Google any perfect exercise for yourself, where you think if you want to tone down your जिस तरह के mostly जो लड़कियों को हो रहा है कि हमारी जो double chin आ रही है और पता नहीं क्या क्या. It's not about that you should starve yourself. खाना ये नहीं कि आप खाना ही बंद कर दें पूरी जिंदगी आप कि नहीं हम तो खा ही नहीं सकते because we're gaining weight. It shouldn't be like that, girls. Let me just give you a secret, जो कि बहुत सारे personal tips होती हैं, जैसा मैंने अभी अलीना से भी कहा कि आपके अपनी सीक्रेट टिप्स देती हैं नहीं देती. इट ऑल डिपेंड्स. जिस तरह की मेरी बहन है वो मुझे अपनी जिस तरह शी इज़ ए फैशन डिज़ाइनर, तो वो मुझे अपनी टिप्स दे रही होती है कि नहीं तुम इस तरह को कपड़ों को कर लो एंड ऑल दैट. सो यू नो दैट्स हाउ इट शुड बी लाइक. लेकिन समटाइम्स यू आर थिंकिंग कि अपनी कोई personal tip दें या नहीं दें, because you just feel a bit insecure, which is not right at all, because you don't need to feel insecure, you just need to feel confident in yourself. But anyways, we have a call. Hello. जी अस्सलाम वालेकुम. वो कौन बात कर रहा है? मैं लाइबा बात कर रही हूँ. कौन बात कर रही है? लाइबा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. लाइबा कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से. ये बताएं क्या करती हैं? स्टडिंग एंड जॉब. Studying. What are you studying? Basically मैंने अभी BA का part 1 क्लियर किया है, और अब फिलहाल जॉब भी चल रही है. दोनों चीजें साथ चल रही हैं. अच्छा, जॉब भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं. Wow, that's tough. और कोई फारिग टाइम आपके पास होता ही नहीं होगा फिर तो. बिल्कुल भी नहीं होता. एग्जैक्टली. अच्छा, तो अभी जैसा ईद की छुट्टियां आई थी तो उसमें क्या किया आपने? उसमें फाइल टाइम था ना, जिस तरह कि आप वर्किंग लें तो आप काम कर रही हैं और पढ़ रही हैं साथ साथ, तो जब ऑफ मिलता होगा तो एक वो रिलीफ होता होगा कि हाँ भाई ऑफ आ गया. एग्जैक्टली, बहुत बड़ा रिलीफ होता है. इस वक्त ऑफ में तो ऑब्वियसली जो आते हैं जो वर्किंग होते हैं, जो वर्किंग करने वाले होते हैं, उनके लिए तो आराम ही सबसे मेन चीज होती है. तो बस आराम किया, कुछ काम भी किए, और ऑब्वियसली तफरियाँ तो ईद और तफरियाँ ना हो तो अजीब ही लगता है. हाँ. अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आप दे सकते हैं कि आप फाइव टाइम में क्या कर सकते हैं क्या नहीं. तो आप अपने क्या टिप्स देना चाहेंगी, या कोई ऐसी माइंड में कोई चीज़ हो कि हाँ यार फाइव टाइम में ये करना चाहिए? फारिग टाइम में यूजुअली मैं तो बोलती हूँ अपनी स्किल्स को देखना चाहिए कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं जो आपको आगे वर्क में आप ला सकते हो. कि मतलब आप कुछ अगर आप फारिग बैठे हो तो यू हैव टू वर्क लाइक, आप देखो कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स है जो आपको आगे आपके लिए वर्क कर सकती हैं, या आपकी कोई फील्ड है ऐसी जिसमें आप जा रहे हो तो आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकती हैं. और बाकी तो ये है कि कुछ लोग जैसे हैंग आउट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना चाहिए फारिग टाइम में. हाँ. अच्छा, तो आपने समटाइम्स ट्राई खुद भी करती हो, या फिर जो खुद की टिप्स होती है मोस्टली काम नहीं करती खुद पे? नहीं, मैं बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि मुझे शौक है इन सब चीजों का. तो मैं ज्यादातर, मुझे पता है मेरे अंदर क्या है, तो मैं उसी पे वर्क करती हूँ. जैसे मेरे अंदर डिजाइनिंग का है तो मैं डिजाइनिंग पे वर्क करती रहती हूँ. तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि टाइम आपको वेस्ट नहीं होता, आप कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो. Exactly. All right. Okay. Thank you for calling. It was nice talking to you. Bye bye, guys. We're going to be going for a break right now. Do you know when you're actually watching Girls Public? And we're back from the break, guys. You are watching Girls Republic. आज हम बात कर रहे हैं कि फाइव टाइम में आप क्या कर सकते हैं. You know, if you have free time, right? What you can do is, what I do is sometimes I just finish up my Gossip Girls episode. Gossip Girl जो मेरी TV series आजकल देख रही हूँ. अगर फाइव टाइम जब होता है तभी मैं Netflix ऑन करके देख रही होती हूँ. I know कि कुछ लोगों ने कहा है कि Netflix हमारी कंट्री में नहीं चलता. Netflix is a, जिनको अगर नहीं पता, it's an application जहाँ पे आप जो है you have to pay monthly, right? Monthly आपको पे करना होता है. पूरा उसका प्लान
plan होता है, you just pay for it and you can watch any TV show that you like, whichever one you want to watch you can. So when I first came back here to Pakistan and I was just thinking कि उस वक्त तो मैं बहुत ही मेरा career भी उस वक्त start नहीं था because I had just come back from UK and I was just living here and I was just thinking I don't even have no friends, so and I had all the free time in the world because I had nothing to do at all. So what I was thinking कि एक तो मैं बाहर इतना घूमती रहती थी जाके क्योंकि and just used to come back home and just having the time of my life basically. जब आपके पास कुछ भी नहीं होता करने को फिर आप उसको बोल रहे होते भाई कुछ भी नहीं काम करने के लिए, we don't have anything to do. और जब कुछ आ जाता है, काम आ जाता है या कुछ भी कोई प्रोडक्टिव काम होता है फिर आप बोलते हैं कि वो टाइम याद आता है जब हम सारे बैठते थे, you know, कोई अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, having your own time. तो वो एक जो होता है जिस तरह के आप नोटिस पीपल जब गर्मी होती है तो लोग कह रहे होते हैं कि सर्दी क्यों नहीं हो रही, जब सर्दी होती है तो उसमें भी खुश नहीं होते. इस वाइक किसी हाल में इंसान खुश नहीं रहता है. सो दैट्स ए फैक्ट. हर किसी की लाइफ का ये होता है कि अगर खुश हैं तो उस वक्त जो है ओवर थिंक स्टार्ट कर देते हैं. आई नो आई बीन टोल्ड द अदर डे कि मैं जब it's quite a bit funny and it's kind of really personal as well, but you should be sharing your own experience here on the show because that's what I do. I'm just being myself, and that's what really inspires people. That's what I think because I have my own inspirations as well. I've seen, well, my own inspiration is Selena Gomez, as you guys all know. तो उसको देख के आप अपनी personal life जिस तरह के वो she just shares her experiences with her fans basically. So that's like that really inspires you to do something what you really want to do and what it just really motivates you. So that's what you need in your life, you know, that ideal figure. But what we're talking about here is spare time, and what I think is if you have spare time in your hands you can just watch your favorite TV series where you're not going to get bored of it. It should be something quite interesting. It shouldn't be like कोई फजूल सी आप TV series लगा के बैठ जाएं. It's all about girly chick flick and stuff. You don't want that. And I remember the time when I used to watch chick flick movies quite a lot. जब इतना मेरे पास free time होता है मैं movies देख रही होती. दिन में 4 मेरी movies खत्म हो रही होती. That was when I was back in UK. तब मैं इतनी movies देख रही हूँ. अब तो मैंने movies ही देखनी छोड़ दी हैं. It's like you don't even have time to watch that movie. If you have time, right, you would have an hour or 2 hours, right? Not more than that because you eventually feel tired. Or well, there's one thing with me where I just actually get tired of staying in one place. जब एक जगह मैं बैठी हूँ जैसे उस दिन मैं एक सेट पे हमारी जो वीजे हैं एक और मैं अभी बताऊंगी इस बारे में डिटेल में आफ्टर दिस कॉल. हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहा है? आवाज बहुत कट रही है. कौन बात कर रही है? मैं बात कर रही हूँ कराची से. कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक. आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. आपने बहुत टाइम बाद कॉल किया हमारे शो पे. हाँ बहुत टाइम बाद करी है. अच्छा तो ये बताएं आजकल क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं आप? कुछ भी नहीं, आजकल ऑफ हुई है, वेकेशन चल रही हैं और घर में बोरियत होती रहती है. देखा, शुक्र है हमारा टॉपिक यही था कि आप फ्री टाइम में क्या क्या कर सकते हैं. अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा तो वैसे ये बताएं कि आप कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं? मेरा अभी कॉलेज स्टार्ट होगा. अच्छा कॉलेज स्टार्ट होगा तो अभी तो 2 months ऑफ है आपका. नहीं आई थिंक 1 month ऑफ होगा. ना 2 months सितंबर से स्टार्ट होगा. अच्छा सितंबर से स्टार्ट होता है. ओके तो क्या प्लान्स हैं, आपने क्या करना है इन 2 महीनों में, क्या करेंगे? अभी 2 महीने में ये है कि 28 पाकिस्तान जा रहे हैं हम लोग. आवाज बहुत कट रही है, प्लीज आवाज चेक करें. हम 28 के बाद पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं. अच्छा सही है. तो पूरी फैमिली के साथ या कजिन्स फ्रेंड्स? फैमिली के साथ. फैमिली में कजिन्स वगैरह सब. अच्छा ओके तो किस तरह कितने दिन का प्लान है और क्या आपने डिसाइड किया? उससे पहले क्या करेंगे? 28 को जा रही हैं, 28 से पहले के क्या प्लान हैं? 28 से पहले मेरी बर्थडे तो उसकी सेलिब्रेशन वगैरह. हैप्पी बर्थडे. अभी नहीं है, 12th को है. मतलब है तो इसी मंथ ना? हाँ है तो आज तो फोर्थ नहीं, आज क्या डेट है? आई डोंट रिमेम्बर द डेट. बट अब मुझे ये बताओ कि आपका तो स्टार साइन लियो होगा ना कैंसर. यार ये क्या हो रहा है मुझे आजकल, क्योंकि स्टार साइन में मुझे बहुत आप जेमिनी हैं, आपकी ढूंढने में नीचे आपके में कैंसर. आपको मेरी बर्थडे पता है? 6 मुझे पता है. मैं हॉरोस्कोप वाला शो है वो मैं देखती हूँ तो मुझे इससे पता है. आप देखती है लेकिन आप कॉल नहीं करती, सो आई एम रियली सैड. मैं तो सुनती हूँ. मैसेज आप पेज पे करती हैं? हाँ आप ना अगर कभी कॉल नहीं मिलती तो आप मेरे पेज पे मैसेज ड्रॉप कर सकती हैं जो हम यहाँ शो पे पढ़ सकते हैं.
अच्छा मुझे ये बताएं कि टिप्स आप देना चाहेंगी कोई हमारे व्यूअर्स का, कोई भी जिस तरह आप फ्री टाइम में क्या करना चाहती हैं, आपको खुद क्या अच्छा लगता है? काम में Spare time. लड़कियों के लिए तो लड़कियों के लिए बेस्ट है कि वो घरेलू काम सीखना तो बेहतर है। ये तो बहुत ही लड़कियों के लिए ये होना चाहिए, ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि यही आगे काम आता है। पढ़ाई तो आती रहती है, मुश्किल वक्त में काम आती है, लेकिन घरेलू काम तो आपकी जिंदगी का पार्ट है ना। डोंट यू थिंक कि बहुत ही लड़कियों के लिए अनफेयर होता है कि घर के काम कर लें और अगर उनको करियर में कुछ करना होता होगा तो वो नहीं करें, वो छोड़ दें जो करियर में फिर आपका नसीब है। अच्छा, तो आपने क्या करना है वैसे फ्यूचर में? मैंने फ्यूचर में आई जस्ट वांट टू डू टेक्सटाइल डिजाइनिंग फ्रॉम कराची स्कूल ऑफ आर्ट। तो बहुत टफ होता है टेक्सटाइल डिजाइनिंग। हाँ वो टफ है, 4 साल है उसके लिए, वो टफ है। 4 years होते हैं क्योंकि मेरी जो कजन थी उन्होंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया था और उनको तो सही का बिजी रहती थी हर वक्त। हाँ तो कोई अच्छी बात है ना, बंदे को बिजी रहना चाहिए। अभी देखें बोरियत जिस तरीके से हो रही है, लेट के कमरे में तो एक काम करो ना, एक्सरसाइज कर लिया करो, कोई बुक पढ़ लो। मैं वैसी पतली हो यार, नहीं पतले होने की बात नहीं है, आप अपने आप को ना थोड़ा वो एक्टिव रखो। मैं एक्टिव अपने हाथ पे रखती हूँ, मोबाइल हर वक्त फोन पे आप लगी रहती होगी, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सब सही है। कीप इट अप, बहुत अच्छे काम है। All right, G, thank you for calling. It was nice talking to you. Bye-bye, guys. We're going to be going for a break. And I'm going to be back here watching Girls Public. Welcome back from the break, guys. You are watching Girls Republic. Today we are giving out tips what you can do in your spare time. And as our caller said कि वो अपने फ्री टाइम में जो है हर वक्त फोन पे होती हैं, जो कि मुझे पता है कि हम यहाँ बैठे हुए आपको टिप्स दें, लेकिन मेरे साथ खुद भी यही कि जब मैं फ्री होती हूँ मैं अपने फोन में एक बार एक हो गया कि चलो नोटिफिकेशंस चेक कर लेते हैं। नोटिफिकेशंस चेक करने के चक्कर में you just like आप फिर पूरी वीडियोस, you start watching videos and you go on Instagram and that takes about an hour and then more than an hour, because I remember the other day my mom was calling me जब मैं शूट से घर आई, and it was around 10ish 11 in the night. एक तो सुबह शूट स्टार्ट होती है, रात को खत्म होती है, that's hectic. तो जब मैं घर आती हूँ and I just obviously मुझे फोन में go through करना पड़ता है कि किसके मैसेज आए हैं या कहाँ पे नोटिफिकेशन है कहाँ नहीं है। तो I just go on my Snapchat, फिर कहती हूँ नहीं इंस्टाग्राम पे भी देख लेती हूँ, फिर इंस्टाग्राम में आधा घंटा लग जाता है, फिर फेसबुक पे लग जाता है। And my mom was calling me, आवाज दे रही है कि बताओ मैं कहा आती हूँ और जब मैं आधा घंटा गुजरा है I was like oh my god, और my mom fell asleep, वो सोने चली गई और I was like shoot man, it's not right. बाद में रिग्रेट होता है कि आपने अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। आपको अपने देखना चाहिए कि प्रायोरिटीज क्या हैं। कुछ लोग जो हैं बहुत ही फजूल चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिस तरह कि मैं भी फजूल चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देती हूँ। इट्स नॉट लाइक आई एम द मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, इट्स नॉट राइट। आई मीन nobody is perfect. So there was this really funny joke that I used to joke about back in them days. My sister used to be like, nobody's perfect, Becks, and I used to be like, well, I am nobody, क्योंकि nobody मतलब nobody, you know, if that makes sense. But what I think is जिस तरह कि अगर आपको टाइम को बहुत ही प्रोडक्टिव करना है, क्वालिटी टाइम करना है, you can just go out with your family. If you don't have any friends here, which I don't have any friends here, so I just go out with my family, my sisters, my mom, if I want to, obviously if I'm bored, because the other day I was so bored and I was just thinking कुछ है ही नहीं करने को, because it was a Sunday I think, so I went out with my mom and I did a bit of shopping जो है बहुत ही it's more like something that actually really makes me happy, and you know if I'm obsessed, so that would actually cheer me up. But yes, that is what you can do. Spend your time with your family, your loved ones, and you can just leave this phone away, because this is the main distraction. Because obviously if I am doing the show right now, well, which I am, and I would just go on my phone and there would be something that would actually catch my eye, right, and I would be like, okay, this is quite interesting. But then again, phone has something really, it gives you really good information as well, and as well as compared to just like har cheez good and bad side hota hai, it's got good stuff as well, it's got bad stuff as well. It all depends on you, what you really want to do. So what I think is reading a book might help, because if you are into a bit of novel kind of person, if you are a novel kind of person, if you are into poetry, if you are into writing, so I think that will really help for those who are actually into writing.
which I've actually stopped doing so. And what you can actually do is अपनी skills को enhance करने के लिए you can actually just work on your studies. If you are really missing out on something, अगर आप स्कूल जा रहे हैं, आप किसी टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो you can actually work on it. अपने स्पेयर टाइम में वो कर सकते हैं. It's not like अगर आप किसी मैंने नोट किया है, मेरे जो nephews हैं, मैं उनको अगर I remember when I was babysitting them back in them days when my sister wasn't here, तो उनको मैं बोलती कि चलो स्पेयर टाइम में कोई बुक पढ़ लो या फिर कोई जिसमें अगर आपको सब्जेक्ट में कोई लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत यू नीड टू वर्क ऑन इट, सो यू कैन एक्चुअली जस्ट डू दैट. पर आप नोटिस के बच्चे जो है इस तरह सुनते नहीं, और अगर डांट के बोलोगे तो फिर तो कभी नहीं सुनेंगे. क्योंकि मेरे साथ भी यही कि अगर मुझे मेरी मामा डांटे और मैं सुनूंगी, लेकिन डांट पहले सुन लेंगे एंड थोड़ा बहुत होता है ईगो आ जाता है कि नहीं अब डांट खा ली, अब तो हमने ये नहीं करना. बट व्हेन यू लाइक अंडर 18, राइट, यू हैव टू लिसन टू योर पेरेंट्स. दैट्स नॉट द केस इन आवर सोसाइटी बिकॉज यू हैव टू लिसन टू योर पेरेंट्स ऑल द टाइम. Like no matter what your age is, you have to listen to them because that's what, you know, that's actually going to be good for you. So if you think you are lacking somewhere in your life, कहीं कोई ऐसा aspect है आपकी लाइफ में where you think it needs a bit of more work, just like if I have spare time on me, what I would do is just focus on my passion, जो कि कोई काम जिसमें आपका बहुत ही इंटरेस्ट होता है. Nowadays I'm actually really into makeup quite a lot. Makeup का मुझे इतना आजकल इतना इंटरेस्ट हो गया कि I'm just googling stuff कि how to make your eyes look a bit bigger and stuff like that. You can actually just go on YouTube and search on this girl. She really gives out best DIYs. I think it's called Huda Beauty. जो उनकी जो बहुत ही DIYs हैं जो लड़कियों को आजकल चाहिए होते हैं. Home remedies आ गई कि what you should be doing for your dark circles, what you should be doing for your pigmentation. तो बहुत सारे आप उसमें जो है productive चीजें भी कर सकते हैं. You can just try DIYs, make a paste and just put it on your face. It's not like you have to go out and buy it on the stores because that's not actually going to work because you don't know what's going to work on your skin. But anyways, for now I'm going to be signing off, guys. कोई भी feedback हो मेरे page पर आप कर सकते हैं, which is Becks Khan. And I'm going to be signing off. You guys take care of yourself and I'll see you later.